in the philosophy of cooperative federalism. Sir, for him, empowering the 4.5 crore ODIs socially and economically has been his highest duty, and this is why, sir, he has been appealing in various forums through the parliament and otherwise that, sir, we need support from the government of India to better our tele density, to better our railway density, to have, sir, more funds which we are Please conclude. Please conclude. Sir, I am concluding, sir. Sir, this is what. Sir, the Honorable PM has spoken about Purvodaya, which is the rise of the East. Sir, how can we have Purvodaya unless, sir, states like Odisha are supported economically by government of India by, sir, giving us the funds that are due to us, by, sir, giving us the tele density, the highways, the banking facilities that we, sir, badly need. Thank you. Manni Sri V. Vijay Sai Reddy ji. Deputy Chairman, sir, thank you very much. And I also thank my party president and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, for giving me an opportunity to speak on this particular subject, sir. Sir, for the last 10 years, India has been on the brink of massive economic transformation, which the opposition is not in a position to realize. Sir, for the last 10 years, again, we have grown from being 10th highest GDP to 5th highest GDP in the world, which my colleague, Honorable former Finance Minister Chidambaram couldn't realize it. Sir, in the next 5 years, under the leadership of Modi ji, we are poised to become third largest economy in the world, crossing 5 trillion mark. Please. Mani Jairam ji, baith kar baat nahi. Please, you speak to the chair. Sir, Deputy Chairman, sir. India continues to retain its fast-growing economy status even in the face of global economic slowdown. And we have faced the COVID situation, 142nd among 197 countries in terms of per capita income. The last point, sir, which I would like to bring to your notice is widening widening trade deficit, which is again alarming. Sir, India's overall trade deficit reached 122 billion in financial year 2022-23 compared to $82 billion in the previous year. So the government data indicates that India's trade deficit hit a record high in the month of October, and more alarming is, all the more concerning is India's widening trade deficit with China, and historical high of 83 billion in 2022, and is expected to cross 100 billion mark in 2023 only towards China, sir, from China. Sir, in conclusion, we cannot afford to be complacent, and we should take the necessary steps. I request the Honorable Finance Minister, though there are positive aspects, there are also negative aspects in this economic growth. So I request the Honorable... Thank you. माननीय, सिर्फ ये कहना, कंट्री पर शॉर्ट ड्यूरेशन फॉरेन एक्सचेंज वो एक चेहरा हो सकता है, ही नहीं लगा कंट्री इन द कंट्री होगा। सुबह जब पता चला कि माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, सुबह जब पता चला कि इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी पूरी बातचीत टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और वगैरह वगैरह की चीज़ों में रहेगी। अर्थव्यवस्था का वो एक चेहरा हो सकता है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हुए हैं, उनके लिए आर्थिक परिस्थिति पे जब हम बात करते हैं ना, तो सर सबसे पहले गरीब की थाली नजर आती है। गरीब की, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ भी रख लो, लेकिन अगर गरीब की थाली में ऊपर परिलक्षित नहीं हो रहा है, तो फाइल भी किताबी है और गांव भी किताबी। मैं सिर्फ, और हाँ, बहुत बढ़िया कहा जावड़ेकर साहब ने कहा 80 करोड़ लोगों को, हालांकि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मुफ्त कुछ नहीं होता सर। मैं कई बार सदन में बोल चुका हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है, तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि आर्थिक परिस्थिति क्या है, कितनी समावेशी है, वगैरह वगैरह। सर, माननीय उपसभापति जी, सुधांशु जी जब बोल रहे थे, तालियां बज रही थी सत्ता पक्ष से,
बजती भी हैं। अब विजय साई रेड्डी जी को कष्ट हुआ तो उन्होंने कह भी दिया कि ताली क्यों नहीं बजा रहे हो। तो जब सुधांशु जी ताली बजा रहे के वक्तव्य पे ताली बज रही थी तो मुझे लगा कि गांव शहरों के बेरोजगार पर यह ताली कितनी भारी पड़ रही होगी। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दाएं 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं कुछ चीजें आपके मध्य, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मानव विहीन और मानवीयता विहीन ग्रोथ स्टोरी के पक्ष में भजन गा रहे हैं, करतल ध्वनि कर रहे हैं? सर, कोई भी वैसा ग्रोथ जो फेसलेस हो, जॉबलेस हो, उस ग्रोथ से देश की हकीकत नहीं बदलती है। सर, बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे। अभी पिछले महीने ये खूबसूरत किताब आई है, वेल रिसर्च्ड। आधी किताब में सर रेफरेंस है, ये है अनइक्वल। सर, हम किन देशों से पीछे हो गए हैं पता है? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। ये है सर दस्तावेज, ये अनइक्वल स्वाति नारायण की। बीते दिनों बिहार में एक जातिगत सर्वेक्षण हुआ। मैं चाहूंगा तमाम हमारे भाजपा के मित्र, उनको ना उससे मतलब ना हो, उसके प्रति विरोध हो, लेकिन एक बार उस दस्तावेज को पढ़िए, क्योंकि उन आंकड़ों में नंबर के बाद आर्थिक सामाजिक परिवेश भी जाहिर हुआ है। और तब प्रधानमंत्री जी पुनः ले जाऊंगा 14 में बिहार गए थे। बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात वो करके आए थे, हाजीपुर, दरभंगा, पटना। सर, बिहार को आपकी जरूरत है माननीय सत्ता पक्ष। बिहार के पास रेवेन्यू के साधन कमतर हैं। बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट के नजरिए से मत देखिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दीजिए। क्योंकि अगर आप इस किताब का विश्लेषण करें, सरकार के आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो आपको साफ दिखेगा कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देश के बाकी राज्यों से पिछड़ रहा है। उसके अलावा दूसरा पहलू कहता हूं माननीय उपसभापति महोदय, इस किताब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को धृत किया गया है, नॉर्थ साउथ डिवाइड के संदर्भ में भी। और ये पुरानी बात है सर, एफडीआई को ही देखिए कि नॉर्थ में कितना, साउथ में कितना, तो ये फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार को नए नजरिए से देखिए। जो शुरुआत वहां के मुख्यमंत्री नीतीश जी, तेजस्वी जी ने की, आप हैंड होल्डिंग करिए और स्पेशल स्टेटस दीजिए। दूसरी चीज सर, अगर मनरेगा में रूरल डिमांड बढ़ रहा है तो रूरल डिस्ट्रेस को एक्नॉलेज करिए। उसको एक्नॉलेज किए बगैर बात नहीं बनेगी। उसको डिनाइल से अब कुछ हासिल नहीं कर पाए। पॉवर्टी इंडेक्स पर आपने कई वर्षों से काम नहीं किया। आप आंकड़ों के बारे में तो सरकार का दृष्टिकोण है कि विश्व के टिम्बकटू में अगर एक आंकड़ा पक्ष का कोई बोल दो तो उसको प्रदर्शनी लगा देंगे। अगर कोई आंकड़ा सरकार को असहज करता है तो कहेंगे हम तो इसको मानते ही नहीं है, इनकी तो मेथोडोलॉजी खराब है। साहब नहीं, ये डिफरेंशियल दृष्टिकोण मत रखिए। हंगर इंडेक्स पे खुल के कहिए हम मीट नहीं कर पाए हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे कलेक्टिव फेलियर का। हमें एड्रेस करना होगा। आपको असल में लग गया सर, बस 1 मिनट लूंगा माफी के साथ। सर, आपको असल में लगता है कि आप इनकम इनइक्वालिटी की बात ना करें, पॉवर्टी रिडक्शन की बात ना करें, अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेसिंग की बात ना करें, चुनाव आप फिर भी जीत जा रहे हैं। मैं मानता हूं आपने वो तिलिस्म विकसित कर लिया है कि समस्याओं को एड्रेस किए बगैर भी चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं। लेकिन जिन बोतल से निकला ये जिन देश पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। वेल्थ टैक्स को लेकर के, इनकम इनइक्वालिटी को लेकर मैंने कहा, वेल्थ टैक्स 16 में आपने अबॉलिश कर दिया। किसानों के बारे में सर मैं कहता हूं, आप कहते हैं शेयर बाजार उछल रहा है, बड़ी तारीफ होती है। सर, शेयर बाजार उछले और एक किसान आत्महत्या कर ले, एक युवा बेरोजगार आत्महत्या कर ले, तो आप किस चीज को कहेंगे? सर, और कुछ नहीं कहना चाहता। हाशिए के समूहों में पॉवर्टी की जो परिस्थिति है, आप बिहार का डेटा देखिए। आखिरी सर, एक सुधांशु जी बड़ी अच्छी चीजें बता गए, हमें तो लगा कि हम तो बेकार परेशानी है गरीबी से, भुखमरी से। 30 सेकंड सर। तो
मैं आपके माध्यम से अपने मित्रवर को कहता हूं, जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे? जय हिंद सर। थैंक यू, धन्यवाद प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। माननीय श्री एलामारम करीम जी। Thank you, sir. The real state of our economy concerning around the people will be clearly understood by the latest RBI report, which says the household's financial assets, including bank deposits and cash equity investment, fell down sharply to 5.1% of the GDP in the fiscal year ended in the March 2023. See, on the other hand, the household debt increased 5.8% of the GDP in the financial year 2023, which is the second highest annual increase since independence. Recent RBI data also reveals that bank financial institution credit to institutions bar business marked a decline, while personal loan portfolio has increased in volume during in the current quarter, which clearly signals further slowing down of the economy along with the rise in the people's indebtedness and resulted distress. Sir, in addition to these technical issues, there are broader concerns about the overall economic direction of the country. Tax concession and incentives are given to the rich corporates, are widening the gap between the two Indias, the rich and the poor. Real income of the top 1%, the cronies of Modi government, rose by 30% from 7.9 lakh crores in 2019 to 10.2 lakh crores in 2022. While the real income of the lowest 25%, who are shouting slogans for you, by the 11% from rupees 3.8 lakh crores to 3.4 lakh crores. Sir, a relentless propaganda continues to boost the Indian economy's resurgence. The recent G20 summit was used to project India as an emerging economic powerhouse in the world. But the truth is that India has the lowest per capita GDP among the G20 countries. That was hidden. Ranks the lowest in terms of human development indices and records the lowest labor force participation rate, Chidambaram told you, reflecting the very high level of unemployment. The continued decline in the people's purchasing power is impeding the economic growth as this leading declining levels of domestic demand. This in turn leads to declining levels of investments. This means potentially further declining levels of employment guarantee. New proposals for investment in the economy have rapidly declined. Over the last year, 72.5% in government sector and 79% in private investments. Sir, massive propaganda is launched over the grand success of Make in India. That was the slogan from 2014. Its target for manufacturing sector growth over this decade was 12.14%. The reality is that since 2013-14, this averaged only 5.9% per annum. The tall claim, where it has gone? The share of the manufacturing GDP was targeted to reach 25%. This, however, remained stagnant at around 16.4%. But when 2011 and 11-12 and 21-22, jobs in manufacturing sector declined from 12.6% to 11.6%. I am concluding, sir. Deepening rural distress is reflected in the demand for jobs under MNREGS. Last year, this grew by 15.3%
and compared to 2019-20, this grew by 29.4%, but unluckily, the allocation for MNREGS drastically cut down in the last budget. Fresh evidence that have emerged about the Adani Group manipulation, that is also a part of this economic policy. Manipulation of stock prices of its companies calls for a serious probe. The final Financial Times and Guardian Already have time is based on over. inputs from the